Hello everyone, this is Mariam Fahim and together with my teammates Mamoona and Mohammad Bakhtiar, we are team innovators. Today we will be presenting our complex computing project, the hotel management system. Our project was developed under the guidance of Sir Mohammad Abdullah and we are excited to walk you through what we built, how it works and why it matters. So our presentation agenda is we will be looking quickly at what this presentation will cover by discussing the problem that inspired our project and the solution we developed. Then we'll walk you through our system's design, architecture, coding logic, and testing results. Finally, we will wrap up with our conclusions and what we plan for the future. So our roadmap begins with the big picture, an introduction to the problem, and our motivation. Next, the blueprint, our system architecture, which shows how all parts work together. Then we move to the core, where we will discuss the main data structure that drives our system. After that, we will explore the engine, a detailed look into the code and the logic behind all the operations. We will then present the proof, showing our testing process and results. And finally, we will talk about the future, how we plan to expand and improve this system going forward. Introduction. Our project is a simple yet efficient console-based application written in C. It is specifically designed for small-scale hotels that need a quick and reliable way to manage their rooms and guests. The system allows staff to handle essential hotel operations directly from the terminal. No complex software or large databases required. Why did we build it? The main reason we built this project was to solve the problems caused by manual record keeping in small hotels. Manual systems are slow, error prone, and can't handle real time updates. Our goal was to streamline and automate key hotel operations such as room booking, guest check ins, and checkouts. Let's look at some of the main issues with manual systems. First, data duplication. Paper-based records often cause confusion and even double bookings. Second, billing errors. Manual calculations lead to costly mistakes. And third, slow service. Staff cannot instantly check room availability, which delays the entire process. System architecture. Our system is built around a very simple but powerful concept, a 50-element array of struct room. This array functions as our in-memory database, storing all essential information about each room, such as its number, type, and occupancy status, okay, whether it is occupied or not occupied, right? So its functional modules are the entire program revolves around four key functions that interact with this array. Firstly, the main function initializes the data and controls the menu system. The display room details function reads from the array and shows the status of each room. The book room function writes to the array to mark a room as occupied, and the checkout function writes to the array to mark a room as available. Deep dive. Let's talk through the C code and function by function. First of all, in the code, we had defined a user-defined data type, which is struct room, which is further consists of different data types, which is int, char, int, float, and char. So basically, in the struct room, we had defined different parameters regarding room, or we can say basically in struct data type, we had firstly defined the different data types, which are showing the parameters of room. So firstly, we have room number, which we had stored in data type. Secondly, we have room type array, for which we had used the character. Third, we have the capacity. Fourth, the rate of the room. Fifth one, the status. Either it will be occupied or it will be available. And the last one is guest name, which we had stored in a string. Now I'm going to explain some of my parts. The struct is the heart of our system. It's the blueprint of all our data. Like the struct is the main body, we can say, or it is the main, as we had mentioned, the heart of our system, because it's the main, everything in our system is defined in the struct. An array of 50 of these struct holds all the hotel data. Basically, in this line, we are trying to say that the array of this struct holds the whole data or holds the whole body of our code. Status, the most crucial field, it tracks if a room is available or occupied. Status is there, we have defined the status because we just want to show that either our room will be available or it will be occupied. So status will help us to mention it. And lastly, we had used the guest name, which stores the current guest name. It's empty if the room is. तो सबसे पहले हम int की बॉडी को देखेंगे. int की बॉडी के अंदर सबसे पहले हमने इनिशियलाइज किया है टोटल रूम्स को, जो कि हमारे पास है 50. के बाद हमने हमारी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो कि थी स्ट्रक्ट रूम उसे यूज किया है और उसके अंदर हमने एरे बना के टोटल रूम्स को स्टोर कर दिया है, व्हिच इज 50.
अब हम अपना जो है ना लूप लगाएंगे ताकि हमारे जो 50 रूम्स हैं वो चेक होते रहे वन आफ्टर वन. So for loop we had initialized it firstly, like I को हमने 0 से initialize किया है. एंड सेकंड कंडीशन में हमने कहा कि भाई i जो है वो लेस देन होगा टोटल रूम से, विच मींस i लेस देन 50, लाइक i जाएगा 49 तक. एंड फिर i का इंक्रीमेंट होता रहेगा लाइक i प्लस प्लस. उसके बाद हमारे कंडीशन लगाई है फॉर लूप की बॉडी के अंदर हमने लिखा है दैट इज रूम एरे, जिसका हमने एक पैरामीटर लिया है रूम नंबर. उसका इंक्रीमेंट हो रहा है, लाइक आई की वैल्यू हमारे पास अभी 0 है, लेकिन जब हमारा ये लूप चलेगा तो जो रूम नंबर है हमारा वो तो 1 से स्टार्ट होगा ना, तो इसलिए हमने +1 किया है ताकि यहाँ पे हमारे 0 इंडेक्स यानी कि रूम नंबर 1 की बात हो. और फिर इसी लूप के अंदर हमने कंडीशन लगाई है विच इज इफ आई लेस देन इक्वल्स टू 9. मतलब कि अब हम बात कर रहे हैं रूम की जिनका इंडेक्स है 0 से लेके 9 तक, लाइक रूम नंबर 1 to 10. तो इन रूम अगर हम कह रहे हैं कि भाई हमारा आई की जो वैल्यू है इज लेस देन इक्वल्स टू 9, तो क्या होगा. फिर हम इसकी अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम इसकी बॉडी में जाएंगे. एंड हियर इज str कॉपी. एंड हियर इज str कॉपी जो कि हमने एक फंक्शन यूज किया है. अब वो फंक्शन का काम यहाँ पे ये होगा कि वो जो रूम एरे है उसकी रूम टाइप को स्टैंडर्ड डिक्लेयर करे. लाइक जब भी हमारे आई की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक होगी तो वो रूम की टाइप हमारे पास कहलाएगी स्टैंडर्ड. उसके बाद हमने कहा कि भाई आई एरे ऑफ रूम इज इक्वल्स रूम. अब हम जो रूम होगा ना लेस देन 1 to 9 उनका हम रेट डिफाइन करेंगे विच इज 800. एंड थर्डली वी आर गोइंग टू डिफाइन द कैपेसिटी ऑफ द रूम विच इज 2. लाइक जब भी हमारा आई की वैल्यू 0 से लेकर 9 तक होगी उसकी जगह 3 कंडीशन होंगी. कंडीशन में क्या पहले आएगी रूम टाइप, सेकेंडली वी हैव द रूम रेट एंड थर्डली वी हैव रूम कैपेसिटी. रूम टाइप इज स्टैंडर्ड, रूम रेट इज 800 एंड द रूम कैपेसिटी इज ऑफ 2. अच्छा, for suppose continuing from there, we had discussed the if condition in presentation. Now I'm going to explain the else if condition. So in essence, if I is less than equals to 19, this condition will hit or be true. So here I should must be greater than or equals to 10 till less than equals to 19. तो अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो हम एल्स इफ की बॉडी में जाएंगे. एल्स इफ की बॉडी में सबसे पहले वही यूज हो रहा है हमारे पास फंक्शन विच इज strcpy जो कि कॉपी का फंक्शन है. अभी क्या करेगा, ये हमारा जो रूम का एरे होगा उसके अंदर रूम टाइप को कॉपी करेगा विच इज डेलेक्स. एंड देन फिर हम रूम वाला एरे यूज करेंगे विच इज रूम आई, और ये कॉपी करेगा हमारा रेट. एंड थर्ड वन इट विल कॉपी द कैपेसिटी विच इज ऑफ 5. So basically in this condition, if I is less than or equals to 19, our room time will be deluxe, its rate will be 1200 and its capacity will be of 5. Let's suppose if the value of I is greater than 19, so what will happen? This condition will be false. Then our code will move to the third condition of else if, which is I less than equals to 29. And this condition will be true until I is equals to 29. So here we are going to talk about the room from 21 to 30 in the having index of uh, 20 to 29. So if this condition is going to be true, then हमारा फिर से वही फंक्शन यूज होगा strcpy वाला जो कि हमारे रूम के अंदर रूम की टाइप कॉपी करेगा which is sweet. And then we will mention the rate of the room and the capacity which is 2000 and the capacity is of 7. Let's suppose if this condition is also being false, like we have the value of I greater than 29. So we are going in the else condition. Else condition is valid for the room number having the index of 30 till 49, or we can say room number 31 till 50. Like in this condition we have 20 rooms. So firstly जैसे ही वो else की बॉडी के अंदर इंटर होगा तो सेम वही जो बाकी सब कंडीशन में हुआ है strcpy फंक्शन को यूज करके हम उसकी रूम टाइप कॉपी करवा लेंगे और फिर हम उसका रेट स्पेसिफाई करेंगे विच इज 5000 और उस रूम की कैपेसिटी विच इज 10. तो जब हमारी रूम जो है ये सब हमारी अगर हमारी एल्स वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये सब प्रिंट होके आ जाएगा. एंड देन हम क्या कर रहे हैं कि भाई अब हम रूम का स्टेटस शो करवाएंगे ना अपने यूजर को. तो हम उसके लिए यूज किया है strcpy वाला फंक्शन और इसके अंदर हम जो है स्टेटस डिक्लेयर कर रहे हैं जो कि होगा अवेलेबल. So the function to display menu. अच्छा, अब हमने ये फंक्शन बनाया है डिस्प्ले मेन्यू का, which is of data type void because it's not returning anything basically. बस 4 दफा चीजें प्रिंट हो रही हैं. ओके, क्या प्रिंट हो रहा है? डिस्प्ले रूम्स, रूम बुकिंग, चेकिंग आउट एंड एग्जिट. बिकॉज जब हम रन करेंगे तो यही 4 हमारे पास शो हो रहे होंगे ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, राइट. अगर हम लोग डिस्प्ले रूम्स चूज करते हैं, लाइक सपोज इफ यू क्लिक